we have studied our cardiovascular drugs. Because if you don't know about the cardiovascular system, if you don't know the electrophysiology of heart, if you don't know the physiology, you will never understand the pharmacology, and that's why we have taken pharmacology, that HAP cardiovascular system first, and we will start today anti-arrhythmic drugs. Okay, so in most of the time I used to say this thing. First, you have to read anatomy physiology. Okay, then you have to read pharmacology, or you can say you have to read biochemistry, you have to read microbiology, and then you can read pharmacology. Because pharmacology is an applied subject, and if you want to understand that pharmacology, you have to be clear about your physiology, you have to be clear about your biochemistry, you have to be clear about your microbiology. If you want to understand the antibacterial drugs, and if you don't know about the microbiology, you will never understand antimicrobial drug. If you don't know how many types of bacteria are there, what is meant by gram positive, gram negative, difference between gram positive, gram negative, how bacteria will divide itself, how there is a replication of bacterial DNA, how there is a transcription of bacterial DNA, how bacteria will synthesize the protein. So replication, transcription, translation, the enzymes required over there for replication, transcription, translation, all these enzymes, they are nothing but the targets for antimicrobial drug. And if you understand the basic, you can understand the classification of antibacterial drug. Okay, in the similar way, if you understand the carbohydrate well, so what are the different types of carbohydrates, classification of sugars, their isomerism, enantiomerism, then in that you are going to have your metabolism. If you have not understood the metabolism, oxidation of glucose, if you are not well aware about the what are the different hormones that controls the blood sugar level, है ना, तुम्हारा माहिती आपको मालूम ही नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, उसका मेटाबॉलिज्म, है ना, कौन से हार्मोन है कि जो मेटाबॉलिज्म में अफेक्ट करते हैं, कौन से हार्मोन जो है ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, कौन से हार्मोन जो है ब्लड शुगर को कम करते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपोग्लाइसेमिक। अगर आपको ये मालूम है हाउ देयर इज रिलीज ऑफ इंसुलिन, ओके, अगर आपके बॉडी में ब्लड ब्लड शुगर लेवल कम है तो कौन सा हार्मोन रोल में आएगा, अगर आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो गया तो कौन सा हार्मोन रोल में आएगा, वो क्या करेगा, व्हाट आर द मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ these hormones. If you can't understand this, if you are not clear this, you will never understand the anti-diabetic drugs. So that's why we have to read HAP first, then pharmacology, then chemistry option, or you can read biochemistry then. Okay, because there are some interrelated chapters. Okay, like for example, if you can't understand the cardiovascular system, तुम्हाला जर आपको अगर cardiovascular system समझ में नहीं आया तो आपको ड्रग एक्टिंग ऑन cardiovascular system नहीं समझ में आएगा. ओके, उसमें एंटी एरिथमिक ड्रग है, उसमें ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन है मतलब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है. उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, उसमें एंटी एंजिनल ड्रग है. ओके, so there are few chapters from pharmacology which are dependent on your cardiovascular system. That's why we have taken cardiovascular system first, and then I am going to explain you now what are the different types of arrhythmia, why anyone suffer from arrhythmia, what are the reasons, what are the different drugs used in the arrhythmia, classification. Because these drugs used in the arrhythmia, they are important. Every year you may find one or two questions from this arrhythmia. So most of the questions, they are from either classification, most of the question they are from classification for this chapter. Okay, so anti-arrhythmic drug, what do you mean by arrhythmia first? Am I audible to you clearly? Okay, so first you should know what is meant by arrhythmia. So what is meant by arrhythmia? It is a term, arrhythmia, arrhythmia. Okay, you can see arrhythmia. So arrhythmia means altered rhythm of your heart. Now what is the normal rhythm of your heart? If you can't know, if you are not well aware about the normal rhythm, so you will need to understand the altered rhythm. अगर आपको फिजियोलॉजी मालूम नहीं है तो आपको पैथोलॉजी मालूम नहीं होगा, है ना, and you cannot differentiate between फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या होता है कि नॉर्मली जो आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, पैथोलॉजी क्या होता है कि जो अल्टर्ड हो चुका है. अल्टर्ड हुआ मतलब क्या है, उसका उसका अपन ये बोलते हैं कि वो डिसीज है ना.
So what do you mean by arrhythmia? If you want to understand this, you should know what is the rhythm of your heart. What is the rhythm? Rhythm is nothing but your heart should beat within a minute. एक मिनट में आपका हार्ट बीट कितना होना चाहिए? So around 72 times. Your heart should beat 72 times in a minute. That is the rhythm of your heart. तो वो आपके हार्ट का नॉर्मल रिदम है कि नॉर्मली आपका हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स बीट होना चाहिए. That is known as the normal rhythm of heart. What is meant by arrhythmia? Arrhythmia or arrhythmia. Arrhythmia or arrhythmia. Arrhythmia means what? Disturbance in the rhythm of heart. So if your rhythm of heart is disturbed, if there is a change in the rhythm of heart, if there is alteration in the rhythm of heart, known as arrhythmia. Arrhythmia. Arrhythmia is nothing but the disturbance in the rhythm of heart. What is the rhythm? Your heart should beat 72 times per minute. And if it is beating more than 72 times per minute, or if it is beating less than 72 times per minute, known as a dysrhythmia, okay, or dysrhythmia or arrhythmia. So arrhythmia is also known as a dysrhythmia or arrhythmia. Dysrhythmia और arrhythmia. तो दोनों टर्म्स क्या है? पैरेलल टर्म्स है. डिसरिदम और ए रिदम ना. ए रिदम मतलब क्या है कि जो नॉर्मल रिदम है उससे डिस्टर्ब होके कुछ अलग दिख रहा है. ए रिदमिया. नाउ व्हाट इज मीन बाय एंटी arrhythmic drug? So these are the drugs which are used in the treatment of cardiac arrhythmia. Now what is meant by normal rhythm? 72 beats per minute. You know that your heart is going to beat 72 beats per minute, right? Na? 72 beats per minute. Now this is known as a normal rhythm of your heart. Now if there is a increased activity of heart, so your heart will beat, say for example, 80 beats per minute. Okay, so known as a again arrhythmia. If your heart is beating 40 beats per minute, again is a it is a disturbed. Okay, it is a again arrhythmia. Now arrhythmia are of two type. So arrhythmia are of two type. So first is known as a okay tachyarrhythmia. Tachyarrhythmia means if there is increase in the heart rate. अगर हार्ट रेट आपका नॉर्मल से बहुत ज्यादा बीट कर रहा है, टैकियारिथमिया. दूसरा होता है ब्रेडियारिथमिया. ब्रेडियारिथमिया मतलब अगर हार्ट बीट कम बीट कर रहा है. So there are two types of arrhythmia. Your heart may have less rhythm or your heart may have more rhythm. Okay, but both conditions are nothing but the arrhythmia, right? Tachyarrhythmia and bradyarrhythmia. So normal rhythm of your heart is 72 beats per minute, right? Now if it is increased or decreased, known as a arrhythmia. Now drug used in the treatment of arrhythmia, or drug used to correct the arrhythmia, or drugs used to prevent the arrhythmia, they are known as an anti-arrhythmic drug, right? Right? Yes or no? Are you able to hear me properly? So cardiac arrhythmia means what? Disturbance in the rhythm or synergy of cardiac muscle or okay cardiac tissue. Now this disturbance, this synergy, okay, this rhythm is disturbed in case of either impulse generation or impulse conduction. So you know that your heart beats, but how it beats? There is a there is a generation of impulse by SA node. SA node मतलब साइनोएट्रियल नोड. ये जो नोड है आपका वो impulse बनाता है. You know that cardiac tissue is a having excitability and automaticity. Every cardiac cell can generate impulse and can transmit impulse, can react with that impulse in terms of excitability, you know, right? But mostly at a SA node there are specific type of cell, okay, known as a pacemaker cells. They are the collection of pacemaker cell just below the your superior vena cava on the in the right atrium. We have seen that there is a particular kind of cell, collection of cell known as a SA node, which generates the impulse and transmit the impulse. Okay, now AV node also can generate the impulse, can transmit the impulse. Other cardiac muscle like cells in the atrium, cells in the ventricles, they are also able to generate the impulse and transmit impulse. But the frequency at which SA node generates the impulse, it is a more as compared to other, and that's why SA node is known as a pacemaker of your heart. Okay? Now it
generate the impulse around 68 to 72 impulse per minute. So that's why your heart is having 72 beats per minute. Now if 72 beats per minute are there, it is known as a normal rhythm. Okay, if there is increased heartbeats or if there is a decreased heartbeat, known as a dysrhythm or non-synergy, known as a arrhythmia. Okay, known as a arrhythmia. Now this arrhythmia is because of the two reasons. First reason is nothing but the either there is a problem in the generation of impulse, either there is a problem in the initiation of impulse, or either there is a problem in the conduction of impulse. So arrhythmia mostly because of the two reason. First reason is that, okay, blockage or problem in the impulse generation by SA node, or problem in the conduction of impulse. So this is the reason for arrhythmia. Okay, so there is a either definite disturbance in the impulse generation of your heart or impulse conduction of your heart. So because of that, your heart is beating either slower than normal or either faster than normal. If it is beating slower than normal, known as a bradyarrhythmia. If it is beating more than normal, known as a tachyarrhythmia, right? So there are two type of arrhythmia: bradyarrhythmia and trachyarrhythmia. You have to remember this. Okay? Now, antiarrhythmic drugs, they are nothing but the drugs which are used to prevent or to correct, which are used to prevent or to correct the cardiac arrhythmia, to prevent or correct the cardiac arrhythmia. Okay, so anti-arrhythmic drugs. Then now if see, अगर आपके हार्ट बीट जो है ना 72 बीट्स पर मिनट है, दैट इज नॉर्मल. अगर आपके हार्ट बीट 80-85 पर मिनट से, ओके, दैट इज अरिथमिया, बट बहुत ज्यादा नहीं. ओके, यू कैन से इट इज अरिथमिया. अगर आपके हार्ट बीट मोर देन 150 है, यू कैन से इट इज अ, okay, it is known as a, okay, it is known as a fibrillations. If your heart is beating more than 150 beats per minute, known as a fibrillations. Okay, known as a fibrillations. Now drug which are used in the fibrillation known as anti fibrinolytic drugs. Okay, so देखो आपके नॉर्मल हार्ट बीट है, कुछ रेंज में है. अगर बढ़ गया आपका हार्ट बीट, अगर एकदम बढ़ गया आपका, तो अपन बोलेंगे अरिथमिया. बट बहुत ही ज्यादा बढ़ गया हार्ट बीट, फॉर एग्जांपल 150 टू 200 हार्ट बीट्स, आप जब देखते हो आपके लवड़ों को, है ना, तो वो दिन के बाद देखा क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ गया. इतना नहीं बढ़ता कि 150 हो जाए. ओके, so if there is increased heartbeat more than 150 beats per minute, known as a fibrillation, arterial fibrillation. Your arteria, they are beating more than 150, है ना, so known as arterial fibrillation. So drug used in the arterial fibrillation, they are known as anti fibrinolytic drugs. These are the used to correct or to prevent the arterial and ventricular fibrillation. Now another, if your heart is beating more than 350 beats per minute, है ना, अगर आपका हार्ट बीट नॉर्मली बीट कर रहा है, तो दैट इज नोन एज अ rhythmia, cardiac rhythm or cardiac synergy. Now if your heartbeat is beating more or less than rhythm, known as a arrhythm or arrhythmia, right? Now if your heart is beating more than 150 beats per minute, known as a tachyarrhythmia, and particularly it is known as a, okay, it is known as a atrial or ventricular fibrillation. Drug used in the correction of that, known as a anti-fibrinolytic drugs, है ना. Now if your heart is beating more than 350, है ना, ये आपके हार्ट को क्या है कि आपका हार्ट जैसे जैसे उसको देखता है तो आपका हार्ट बीट होता है ना, और भी ज्यादा बीट हो जाए. कब, अगर आपका हार्ट बीट मान लीजिए 350 बीट्स पर मिनट है, so if your heart is beating more than 350 beats per minute, so it is known as a fibrillation. Okay, it is known as a, okay, it is known as a fibrillation. Okay. No, sorry, it is known as a flutter. Okay, so if your heart is beating more than 350, known as a flutter, so it may be arterial flutter or it may be a ventricular flutter. So remember, arrhythmia, normal rhythm, arrhythmia, then fibrillation, and then flutter. Okay. flutter होता है, FLUTER, flutter. So defibrillatory drug, they are capable of restoring the normal sinus rhythm of heart under arterial fibrillation and also used in the arterial flutter. Arterial flutter मतलब और भी ज़्यादा हार्ट आपका रिदम डिस्टर्ब होगा, और भी ज़्यादा. ओके, नॉर्मली हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट, अगर ज़्यादा हो गया तो अपन उसको बोलेंगे एरिथमिया, कम हो गया तो एरिथमिया. बट बहुत ही ज़्यादा हो गया, से फॉर एग्जांपल 150 बीट्स पर मिनट, तो आर्टेरियल, है ना, आर्टेरियल फिब्रिलेशन.
ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्टेरियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन नोन एज एंटी फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स. ठीक है. नाउ अगर आपका हार्ट बीट 350 बीट्स पर मिनट से ज्यादा है, दैट इज नोन एज अ फ्लटर. ओके, दैट इज नोन एज अ फ्लटर. सो these are the drug, basically they are used to correct the disturbed rhythm of your heart, known as the anti-arrhythmic drug. Okay, so did you understand these definitions? समझ में आया आपको? कार्डियक अरिथमिया definition क्या होता है? What do you mean by anti-arrhythmic drug? What do you mean by defibrillatory drug? Yes, समझ में आया क्या? Okay. Now, electrophysiology of heart. Because if you don't know the electrophysiology of heart, you will never understand this arrhythmia. Now, normally what happens? So there is electrical activity in the myocytes. So myocardium is made from myocytes. Okay. So what is the role of myocytes? They used to constrict, they used to beat, they used to contract. है ना? Myocytes जो सेल होता है आपके मायोकार्डियम में, मायोकार्डियम इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल ऑफ योर heart. So myocytes are there in the myocardium. So these are the cells. They are sensitive cells. Okay. And one more property of your cardiac cell, that cardiac cell can generate impulse and transmit impulse. Okay. There is a little bit difference in the muscle cell and cardiac cell. So muscle cell, they will show activity. They will contract. Okay. They will get excited when there is an impulse which is reached to your skeletal muscle. Okay. आपको अगर ब्रेन से इंपल्स आएगा स्केलेटल मसल में, तब जाके वो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना? तो ही नीड्स स्केलेटल मसल नीड्स अ इंपल्स from the external source, right? Now for the cardiac muscle, so as you know, they are having excitability. Okay, they are having automaticity, right? So that's why these muscles, they generate the impulse particularly at the SA node. Okay, they are electrophysiologically active. Okay, so you know that inside cell potential is a negative, है ना? So inside cell potential is a negative, है ना? एक negative potential inside cell होता है and positive potential होता है outside. So this you can say this is extracellular fluid. ठीक है, extracellular fluid, ये intracellular. Now every cell will have its some, okay, will have some its potential. So either it may be positive or negative, but most of the cells, they are having negativity inside the cell. हर एक सेल में क्या है कि पोटेंशियल होता है, ठीक है, एक्शन मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. नर्व सेल में भी होता है, आपके मसल सेल में होता है, आपके कार्डियक सेल में होता है, ठीक है. तो कार्डियक सेल में भी होता है. तो एवरी कार्डियक सेल, मसल सेल, ओके, देन नर्व सेल, दे आर हैविंग इंटरसेलुलर नेगेटिविटी. इनसाइड द सेल नेगेटिव पोटेंशियल होता है, so intracellular negativity. And outside the cell, you know, there is a extracellular fluid, ECM. So in that you are going to have cations, sodium, है ना, then calcium, chloride, etc, etc. Potassium is known as an intracellular cation. Okay. Now when there is a reaching of threshold potential, when there is a reaching of threshold potential, so there is a sudden entry of sodium in the cardiac cell, so which leads to depolarization. Okay. Then again there is a little bit repolarization we have seen. Then there is a plateau level and there is a final repolarization, right? So they are, it is known as electrophysiology of heart. So what will happen initially? So cardiac cell, आपका जो myocardial cell होता है, cardiac cell, so it is having potential of minus 90 millivolt. Yeah? It is known as the resting membrane potential. क्या बोलते हैं उसको? resting membrane potential. So resting membrane potential of your cardiac cell is a minus 90 millivolt. Okay. Now means it has a negativity inside cell. Cell के अंदर क्या है? Negative potential है. That's why minus 90. So it is known as the resting membrane potential. At the rest, your cardiac cell will have minus 90 millivolt potential, right? Now what will happen? So there is a leaky potassium ion channels. There is a leaky potassium ion channel. तो so slow potassium ion channel होते हैं. वो क्या करते हैं कि potassium will, okay, potassium will move from extracellular fluid to the intracellular. पोटेशियम जो है ना, वो अंदर जाएगा सेल के अंदर. कब जाएगा अंदर? ये पोटेंशियल का, ठीक है. जैसे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक, बिकॉज दिस सेल इज हैविंग रिदमिसिटी, ऑटोमेटिसिटी, तो उसको ना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन,
right? That's why at a minus 90 millivolt, that is known as resting membrane potential. At this time, potassium leaky potassium ion channel will open, and there is the entry of potassium inside the cell. You know, potassium inside the cell enter over. Now this minus 90, because of the entry of potassium is having positive charge. Because of the entry of potassium, the potential of cell membrane जो माइनस 90 था वो अभी थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब माइनस 90 क्या होता है, बहुत छोटा होता है ना, माइनस 90 इज लेस देन माइनस 70. तो जैसे मान लीजिए due to entry of potassium, so minus 90 millivolts potential of cell now has become minus 80. Now this is known as a threshold potential. Okay? This is known as a threshold potential. At this potential there is a sudden entry of sodium, there is a sudden entry of sodium through fast sodium ion channel, and your potential of cell will become go to the positive side. You can see what यहाँ तक आएगा 0, बाद में आएगा +10 माइनस +10 +20 ड्यू टू एंट्री ऑफ सोडियम. यहाँ से सोडियम एंटर होगा इस टाइम पे, एंड ड्यू टू दैट, ड्यू टू एंट्री ऑफ फास्ट सोडियम, okay, through a fast sodium channel, entry of sodium through a fast sodium channel, okay, known as the phase 0. Okay, now after the entry of sodium there is a disturbance in the potential known as a depolarization that corresponds to phase 0 of your cardiac action potential. phase 0, यहाँ पे सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएंगे, फास्ट सोडियम आयन चैनल, रैपिडली जो है पोटेंशियल सेल का पॉजिटिव में जाएगा. जैसे यहाँ now after quick depolarization, so your cardiac cell will try to restore the its potential, so by quick repolarizing it. अभी depolarization हो गया यहाँ पे, depolarization फर्स्ट क्या है, depolarization because of the entry of sodium in the cell, that is corresponding to phase 0. The action potential of cardiac cell phase 0, 1, 2 and 3. Phase 0 corresponding to depolarization due to opening of fast sodium ion channels. Okay, and along with the sodium, some calcium also move inside the cell. Now your cardiac cell will try to will try to repolarize quickly. So second phase, that is a phase 1 known as a quick repolarization. Now okay, क्विक रिपोलरेशन सेकंड फेज मतलब फेज 1. ओके, पहला फेज था फेज 0. now third phase, what happens in the quick repolarization, so here fast sodium ion channel जो होता है, fast sodium ion channel, that will be closed, so entry of sodium will be will be will be closed through fast sodium ion channel. Now what happen, so slow sodium ion channels they are open, and again here to restore the potential inside cell, जो पोटेशियम है वो आउट हो जाता है. So there is a leakage of potassium from inside cell to outside cell, so that your cell will maintain some its normal potential. So ये cell will try to establish the repolation quickly by removing the potassium from cell to outside and by stopping the sodium channel, fast sodium channel. But now here slow sodium channel opens and there is entry of sodium slowly, and also calcium channels also opens. So slow entry of calcium and slow entry of sodium is there in this case. Is second point, but there is a leakage of potassium. There is a leakage of potassium from cell to the outside. देखो पहले इसमें क्या होता है फेज 0 में कि फास्ट सोडियम आयन चैनल ओपन होते हैं, सोडियम आयन अंदर जाता है, डिपोलेशन होता है. ठीक है, एक डिपोलेशन मान लीजिए यहाँ तक है +20 मिलीवोल्ट, माइनस 70 मिलीवोल्ट का +20 ड्यू टू एंट्री ऑफ सोडियम इन द सेल थ्रू फास्ट सोडियम चैनल. नाउ अभी क्या है, सेल विल ट्राई टू रीएस्टेब्लिश इट्स पोटेंशियल, कि थोड़ा सा ट्राई करेगा रेजिस्ट करने का. सो सेल विल डू repolarization, so fast repolarization, that is phase 1, and it is done by removing the potassium ions, stopping the entry of sodium ion through fast sodium ion, and also at this time there is a opening of slow sodium ion channel, slowly sodium, and again here there is a stopping of fast sodium ion channel, there is a removal of potassium from inside cell to the outside cell, and also slow sodium ion channels opens over here, and calcium ion channel also. So that's why here is again second phase known as a plateau phase. Because of the entry of sodium through slow sodium ion channel,
because of the entry of calcium through calcium channel, but at the same time there is a removal of potassium. Okay, now entry, whatever amount of sodium and calcium entering in the cell, so as compared to that, higher amount of potassium they are leaving through the cell, and that's why this is plateau level. You can see over here, यहाँ पे सोडियम अंदर जा रहा है, कैल्शियम अंदर जा रहा है, लेकिन ये पोटेंशियल क्या हो रहा है, नेगेटिव साइड पे जा रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ द imbalance between entry of sodium and calcium and exit of potassium. There is an imbalance. That's why it is known as a plateau level, and it will be there for some time. Plateau level. Okay, and then repolarization of cell will start. How? By removing the sodium. Whatever sodium has entered into the cell, that will be removed. Okay, by removing the calcium. Whatever calcium has been entered into the cell, that will be removed by sodium potassium exchange from or sodium calcium exchange, and finally your cell will get its potential, that is a -d, and then lastly -90. Now up to this there is a one cycle. यहाँ तक क्या हुआ है, वन साइकिल हुआ, मतलब क्या, सोडियम अंदर गया, ठीक है, बाद में थोड़ा सा रिकवर होने का ट्राई किया, बाद में कैल्शियम सोडियम अंदर गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया मसल का, ये पूरा फेज 0 फेज 1 2 तक क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हार्ट के, ठीक है, और बाद में रिलैक्स कब हो गए, फेज 3 में रिलैक्स हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फेज 3 में मसल ने क्या किया, या जो डिपोलराइजेशन होता है उसका रिमूव कर दिया, मतलब एंट्री जो होता सोडियम का कैल्शियम का रिमूव कर दिया उसको, ठीक है, हम फिर से रीएस्टेब्लिश किया उसका नॉर्मल पोटेंशियल कितना होता है, -90, ठीक है. तो यहाँ तक ये जो साइकिल होता है, ये साइकिल में क्या है कि ये साइकिल में आपको फिर से दूसरा दूसरा जो साइकिल है कार्डियक साइकिल का दूसरा इवेंट जो है वो नहीं देख सकते. तो ड्यूरिंग दिस वन साइकिल ऑफ cardiac excitation, during the one cycle of action potential, you can say, so during the one cycle of action potential, so if there is a stimulus again, so there is a no more action potential. Okay, इस ये फेज में अगर और भी स्टिमुलस हो गया फिर भी ये कार्डियक सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं, कार्डियक सेल विल नेवर रिस्पॉन्ड until this cycle is complete. एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए. नाउ this period at which cardiac cell will not respond, this is known as a effective refractory period. Effective refractory period means it is a period when there is a depolarization is going on, there is a action potential is going on. ये पीरियड में क्या है, एक्शन पोटेंशियल चल रहा है ना. इस पीरियड में क्या है कि दूसरा कोई सिग्नल आ गया, उसमें ये दूसरे सिग्नल को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. इतने सारे यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पीरियड जो है, इन दिस पीरियड देयर इज नो रिस्पॉन्स टू अनदर स्टिमुलस. अगर आता है अनदर, इफ देयर इज अनदर स्टिमुलस ड्यूरिंग दिस one cycle of action potential, then cardiac cell will not react with that, so cardiac cell will wait for this restoration of their normal potential, and then only second potential cycle will start. यहाँ से फिर second cycle start होगा ना, depolarization plateau, फिर से ना. ड्यूरिंग दिस ऑल्सो, ये दूसरे पीरियड में भी अगर दिस इज नोन एज सेकंड रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसमें अगर कोई स्टिमुलस होता है तो कार्डियक सेल विल नॉट रिएक्ट, तो दैट्स व्हाई इट हैज अ रिदम, है ना. तो देखो पहला एक एक्शन पोटेंशियल हो गया, बाद में नॉर्मल हो गया कुछ टाइम के लिए, बाद में फिर से एक्शन पोटेंशियल हो गया, फिर से बाद में नॉर्मल हो गया, फिर से तीसरा हो जाएगा. सो इट हैज सम रिदम. ओके, so this is known as a electrophysiology of your heart. Okay, how there is an excitation of cardiac muscle. Okay, so I will explain this again, don't worry. Okay, so SA node is known as sinoatrial node, and it is able to generate the action potential, that is 70 impulse per minute, and acts as a pacemaker. Okay, AV node can also generate. AV node means atrioventricular node. It also can generate the impulse, but at a slower rate as compared to SA node. So AV node can generate at a 45 impulse per minute. In case of cardiac arrhythmia, what happens? Some other cells also they develop the capacity to generate the impulse due to some disease or due to some ischemia, due to some blockage in the conduction system, okay, or due to genetic disease, genetic origin. तो क्या होता है कि नॉर्मली तो आपका ऐसे नोड जो है वो इम्पल्स जनरेट करेगा, क्योंकि एट हायर रेट
वही करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेस मेकर। बाकी एवी नोड भी करता है बट एट अ लोअर रेट, इट इज नॉट, इट इज सप्रेस्ड ओवर देयर। नाउ इन केस ऑफ कार्डियक अरिथमिया में क्या होता है आपका, सो कार्डियक अरिथमिया में other heart cell, as you know that every heart cell is having capacity to produce impulse. Other heart cell also develops the, uh, or also they think they are also a pacemaker. Okay, so other cells they act as a, like a pacemaker known as a ectopic focus or ectopic impulses. Okay, and these are known as a okay, these are known as a ectopic foci. So those other cells who acts like a SN node, है ना, उनको लगता है अपन ही भगवान है, जैसे SN node है ना, भगवान एक बना के रखा है उसका, हार्ट का भगवान कौन है, SN node। लेकिन बाकी सेल कभी कभी क्या होते हैं कि उनको भी लगता है कि अपन ही भगवान है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो इम्पल्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, है ना, वो अगर इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं तो that will interfere your conduction system of your heart, and that can cause extra systole, है ना। नॉर्मली ये जब एसए नोड बनाता है इम्पल्स, तब जाके आर्टेरिया कांटेक्ट होता है, तो बाद में वेंट्रिकल्स कांटेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बाकी सेल्स में, अदर सेल्स ऑफ योर heart, say for example cells of your arteria, cells of your conduction system, if they produces the impulse, so what will happen, so that impulse may interfere with the conduction and contraction of your heart, so that, okay, that particular cell other than SN node who generates the impulse, they are known as a ectopic foci. And arrhythmia is due to, one of the reasons for arrhythmia is ectopic foci. Okay, so if other cells develop the capacity to produce impulse, okay, so they are known as a, when they develop the capacity to produce impulse due to some reason, what are the reason, due to some genetic disease or due to some due to some ischemia, अगर आपके पर्टिकुलर मायोकार्डियल के सेल मर जाते हैं ड्यू टू इschemia, ड्यू टू सम डिसीज, so they develop capacity to produce impulse and they used to produce the impulse, they acts like a SN node but they are not a SN node, and that's why they are known as a ectopic foci, and ectopic foci is one of the reason for arrhythmia. तो नॉर्मली जो एक्शन पोटेंशियल है, नॉर्मली जो इम्पल्स है, वो SN node नहीं बनाना चाहिए। अगर बाकी सेल में ऐसा कैपेसिटी प्रोड्यूस होता है, उसको अपन बोलेंगे इक्टोपिक फोकाई, एंड arrhythmia is mostly because of this ectopic foci. Okay, so because of this heart will develop arrhythmia because of this ectopic foci। तो आपका जो SN node है वो तो बनाएगा ही बनाएगा इम्पल्स, बट अगर इसने भी बना लिया तो दो इम्पल्स हो जाएंगे, तो क्या होगा, आपका हार्ट में दो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो अनदर कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है एक्स्ट्रा, उसको बोलेंगे अपन एक्स्ट्रा सिस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज सिस्टोल, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज डायस्टोल। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, एसए नोड से इंपल्स आएगा, एवी नोड तक जाएगा, एवी नोड से आपका वेंट्रिकल्स में जाएगा, एसए नोड से प्रोस होगा, आर्टेरिया कॉन्टैक्ट होगा, बाद में वो इंपल्स एवी नोड में जाएगा और बाद में वेंट्रिकल्स में जाएगा, तब जाके वेंट्रिकल्स भी कॉन्टैक्ट होंगे। बट अगर दूसरा कोई सेल है इसके बीच में, वो अगर इम्पल्स जनरेट कर रहा है क्योंकि वहाँ पे कोई इश्चमिया हुआ है, यहाँ पे वहाँ पे कोई इंजरी हुआ है, या वहाँ पे कोई डिफेक्ट हुआ है, तो उसके कारण अगर कोई दूसरा सेल बनाता है तो उसको बोलते हैं इक्टोपिक फोकाई, और उसका जो इम्पल्स है उसका इम्पल्स इंटरफेयर करता है नॉर्मल रिदम, एंड दैट्स व्हाई आर यू गेटिंग और नॉट, आर यू गेटिंग और नॉट, यस। बाकी नो, energy requirement for heart, energy requirement for heart is fulfilled by one pump known as a sodium potassium ATPase pump। ये जो पंप होता है that will provide energy for cardiac muscle, sodium potassium ATPase pump। Now what is the role of this pump, it will remove sodium from inside cell to the outside cell, and it will take potassium from outside cell to the inside cell, okay? Then again there is another pump known as sodium calcium exchange pump. Now, these pumps, they has very important role to restore their normal cardiac potential। जब सोडियम अंदर जाता है डिपोलेशन होता है, तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा ना, जब कैल्शियम अंदर जाएगा तो डिपोलेशन होता है, लेकिन बाहर निकलना पड़ेगा ना, तो ये निकलेंगे, कौन निकलेंगे, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, also known as sodium potassium exchange pump, and another is a sodium calcium exchange pump। मेनली ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज पंप क्या करता है, मेनली एक्सक्लूड्स मतलब रिमूव्स कैल्शियम फ्रॉम सेल टू द एक्सटीरियर, बिकॉज
जब डिपोलेशन होता है फेज सेकंड, तब यहाँ कैल्शियम अंदर आता है ना, तो उसको बाहर निकलना, है ना. So that's how there is a entry and exit of ions inside. Again you can see over here, so normal membrane potential, normal membrane potential ये होता है -90 मिलीवोल्ट आपका, ठीक है. So when there is a opening of potassium channel, slow leaky potassium channel, थोड़ा थोड़ा पोटेशियम अंदर जाएगा, तब ये नेगेटिविटी थोड़ा कम हो जाएगा. और इस टाइम पे -70 -80 आ गया, -70 -80 90 से, तो क्या होगा, वो पोटेंशियल कम होगा. दैट इज नोन एज अ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल. द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल at which there is a there is a abrupt opening of sodium ion channel, है ना. यहाँ से यहाँ सोडियम आयन चैनल ओपन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे -90, और यहाँ तक जब यहाँ पे आएगा पोटेंशियल -70 -75, so this potential, the potential at which there is a entry of sodium abruptly, this is known as a threshold potential. वहां से ही आपका डिपोलेशन स्टार्ट हो. So at this stage there is a entry of sodium, that correspond to there is opening of first sodium ion channel, that correspond to phase 0. Okay, now पोटेंशियल जाएगा आपको प्लस में कार्डियक सेल का, है ना. तो कार्डियक सेल विल ट्राई टू regain the potential slowly. So that's why at the phase 1 में क्या होता है, there is a closure of fast sodium ion. Okay, fast sodium ion closure, and also sometimes there is an entry of your entry of chloride also is there. Okay? But definitely at the phase 1 fast sodium ion channels are closed, slow sodium ion channels are open, and potassium from inside cell is moved to the outside cell to restore the potential. Now phase 1. After this there is a plateau level. Here there is a entry of calcium inside the cardiac cell. There is entry of sodium inside the cardiac cell. Sodium via slow sodium ion channel. Calcium via L type of calcium ion channel. L current, L and T current type of calcium ion channel. But also same time there is an exit, where there is a removal of potassium from the cell to the outside cell. So due to imbalance between these entry and exit, entry of calcium and exit of potassium, you know, due to imbalance between entry of calcium and exit of potassium, so this is a plateau level. यहाँ पे when the amount of calcium which is being entered into the cell, okay, if it is less than amount of potassium which is leaving the cell, so that's why the potential slowly decreases. कि यहाँ पे क्या है, पोटेशियम रिमूव ज्यादा हो रहा है, कैल्शियम जो अमाउंट है कैल्शियम का अंदर जाने का उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है. देन लास्टली क्या होगा, लास्टली रीपोलराइजेशन, योर कार्डियक सेल विल ट्राई टू रीपोलराइज द पोटेंशियल, दैट इज नोन एज फेज 3. यहाँ से क्या है, इन दिस कैल्शियम चैनल्स दे आर क्लोज्ड, in this potassium sodium channels they are closed, there is a removal of potassium. Okay, and lastly there is a this pumps, sodium potassium exchange pump, then sodium potassium ATPase, calcium sodium exchange pump, they operates. So they try to remove calcium whatever entered in the cell, they try to remove sodium whatever that is entered in the cell. So to restore the final, to restore the final फाइनल इलेक्ट्रोनेगेटिव. फेज 4 में क्या है, फेज 4 में योर कार्डियक सेल इज हैविंग अगेन ओन पोटेंशियल. फेज 4 में फिर से -90 तक पोटेंशियल आ जाएगा, -90 नाउ. ओके, so whatever period is there, this period, okay, this one cycle period is known as a absolute refractory period. It is known as absolute refractory period. Okay, during this period if there is second action potential, when during this period if there is second signal from S node, so cell will not react to the second signal because already depolarization चल रहा है, ऑलरेडी एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, ये फिजिक, ये पूरे फिजिक्स कंप्लीट नहीं हुई अभी तक, और इसके बीच में अगर दूसरा सिग्नल आता है तो आपका कार्डियक सेल उसको इग्नोर कर लेगा, उसको छोड़ देगा, क्योंकि अभी ये चल रहा है ना काम. आप बोलते सर मैं अभी एक काम करो, आप दूसरा काम कैसे बोल रहे, ये फिनिश कर लो पहले बाद में, है ना, क्वेश्चन. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसका, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड.
ये कंसेप्ट आपको कॉलेज में समझते ही नहीं, ठीक है, ये मेरा गारंटी नहीं समझते, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, it is the period where there is a action potential is going on, one one cycle of action potential which is already going on, and during that if there is another impulse, so there is a no response from cardiac cell. Okay, so a second action potential cannot be generated at this time. So first depolarization, okay, phase 1, phase 2, phase 0, phase 1, phase 2, phase 3, repolarization, normal resting membrane potential, and then only second phase will start upon second signal. Okay? That's why it is a rhythm, and disturbance of this rhythm is known as arrhythmia. Okay? तो फेज 4 में लीकी पोटेशियम चैनल फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल, पोटेशियम का एंट्री हो जाएगा, एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आ जाएगा, और फिर से सोडियम अंदर जाएगा, फिर से सोडियम क्लोज, कैल्शियम अंदर, फिर बाद में स्लोली पोटेशियम बाहर, और रिपोलराइजेशन, फिर से रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल फिर से स्टार्ट हो जाएगा. So that's how there is electrophysiology of heart. Okay, okay. Shape of action potential. Shape of action potential at myocardial cell and at a Purkinje system. Okay. Now at a myocardial cell, this is the shape. मतलब at the myocardial cell, you can say the conduction is very high. कंडक्शन इज वेरी हाई. यहाँ पे कंडक्शन बहुत जल्दी फास्ट है, -90 मिली वोल्ट से जैसे आपको पोटेंशियल आता है -80 तक, फटाक से सोडियम अंदर जाएगा, है ना, सोडियम थोड़ा सा क्लोज होगा, कैल्शियम अंदर जाएगा, बाद में आपका पोटेंशियल मेंटेन करने का ट्राई करेगा सर, लास्टली अगेन उसका पोटेंशियल आएगा, कौन सा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -9. बट एट द पर्किंज फाइबर में क्या होता है, तो देयर इज अ स्लो प्रोसेस हो रहा है, बिकॉज ऐसे नोड जनरेट करता है इम्पल्स, कार्डियक आर्टरिया में जाता है, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बाद में तब तक वो इम्पल्स स्लोली जाता है कहाँ पे, एवी नोड में, बाद में परकेज फाइबर है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे देखो देयर इज अ स्लो प्रोसेस हो रहा है. सो right, so conduction is very high at a SA node and atria over there. The conduction is slow at a Purkinje fiber, slow होता है Purkinje fiber पे, conduction is slow, right, and that's why, okay, and that's why there is a gap between atrial contraction and ventricular contraction, क्योंकि वो gap बहुत ही important है to fill the ventricles. अगर एट्रिया ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल्स कब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, है ना, वो फिल कब होंगे, और वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे. So that's why ventricles they are forcefully contracting, okay, because this conduction at a ventricle is little bit slow as compared to atria. Okay, phases of different action potential, electrophysiology of your heart, so already I have taken 2 times, but still I will take. So what is phase 0? So phase 0 is known as a quick depolarization. What happens in this, so cardiac cell membrane with, okay, quick depolarization of cardiac cell membrane with a fast एंड सिलेक्टिव इनफ्लो ऑफ सोडियम. तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आएगा आपका, उस टाइम पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में सोडियम चैनल ओपन होंगे फास्ट, सोडियम आयंस विल गो इनसाइड द सेल, एंड एट द लेटर पार्ट ऑफ दिस फेज 0, इज नोन एज फेज 0, एंड एट द लेटर पार्ट लास्टली क्या होगा, एट द एंड ऑफ फेज 0, तो कैल्शियम आल्सो एंटर्स स्लोली वाया सोडियम चैनल्स, सोडियम आल्सो विल एंटर वाया स्लो सोडियम चैनल्स, यहाँ पे फास्ट सोडियम आयन चैनल बंद होते हैं. द एंट्री ऑफ calcium that will continue, the entry of calcium that will continue through phase 1 and phase 2. This calcium also causes release of more calcium from the stored sarcoplasmic reticulum of the cell, okay, of the cardiac myocytes, and this increase the level of calcium inside the cell. Okay, so what happens is interact with the muscle system of your myocyte, troponin, actin, filament, troponin, actin, myosin, and there is interaction of this calcium with these three, troponin, actin, myosin. They are known as the contractile protein of your heart. तो actin myosin क्या होता है, contractile protein हार्ट के, ठीक है. तो वो contractile protein को एक्टिवेट होने के बाद में ये क्या होता है, इमीडिएटली आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, which contract the heart. Phase 0 of depolarization corresponding to this P wave and PR as well as QRS complex on the ECG. जो ECG अपन ने देखा उसका जो P and PR QRS complex जो that correspond to phase 0, because during this phase 0 and phase 1
there is a depolarization. Now phase 1 में क्या होता है? There is entry of calcium and sodium. Sodium enters via slow sodium ion channel. Calcium enters via calcium ion channel. And there is also outflow of potassium, and there are also some inflow of chloride. Now phase second क्या होता है? Phase second is a plateau level, delay in the repolarization. Delay in the repolarization. It is due to the imbalance between calcium entering in the cell and potassium leaving the cell. Now phase 0 corresponds to your ST segment. जो ECG का ST segment होता है, that corresponds to phase 0. Okay, or coincides with the this phase. Now third phase is known as a rapid repolarization. यहाँ पे rapid repolarization होगा. Your cardiac cell will try to maintain the action potential, try to maintain the resting memory potential. Okay. So rapid repolarization to attain the resting membrane potential caused by removal of extrusion of potassium through potassium channels. Okay, that corresponds to T wave. This corresponds to T wave in the ECG. During this phase, repolarization. During this phase of repolarization, the released calcium gets accumulated in the साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो इनसाइड सेल पोटेशियम कैल्शियम गया था, उसमें का कुछ कैल्शियम बाहर निकलता है बाय यूजिंग योर कैल्शियम sodium pump, but most of the calcium they that get collected and stored in the sarcoplasmic reticulum, because calcium storage house sarcoplasmic reticulum of your cell. Most of the calcium accumulated is stored in the sarcoplasmic reticulum, which results into the lowering of intracellular calcium. ये sarcoplasmic reticulum भी सेल के अंदर ही होता है, बट यहाँ पे कैल्शियम स्टोर होता है. That's why intracellular calcium कम होता है. Okay, so that lowers the calcium concentration in the cell and allows the cell to relax. Now phase 4, there is a final ionic reconstitution, so which is achieved by sodium potassium exchange pump, which will remove the sodium out of the cell and will take potassium inside the cell. And again sodium calcium exchange pump is there. So it will remove the calcium from cell and it will take a sodium, and whatever sodium is taken, that will be again removed by sodium potassium exchange. Okay, so that's how there is electrophysiology. समझ में आया ये आपको? Are you getting or not? Okay. Now very important part is there. Okay, so we'll see the important terms related to this. What are the important terms related to this? Okay, I hope you are able to see the screen. Is there a screen दिख रही? Are you able to see that? Okay, first term is nothing but the automaticity. So what do you mean by automaticity? It is nothing but the capacity of heart cell, capacity of myocytes to undergo spontaneous diastolic depolarization. जैसे आपका नॉर्मल पोटेंशियल लिस्ट हो गया, फिर से ये क्या होगा, depolarize होगा सेल. So automaticity is nothing but the capacity of heart cell to undergo spontaneously the diastolic depolarization. So to undergo spontaneous diastolic depolarization, that is the automaticity. In the normal heart, this automaticity is highest at the SNO. Capacity of heart to undergo spontaneous diastolic depolarization. Okay. In the normal heart, it is the highest at SNO, that is known as pacemaker. Okay. But in case of diseased heart, in case of arrhythmic heart, you know, there is a development of small ectopic foci, which also develop the ability to generate the impulse, and they act like a SNO. उनको लगता है अपन ही होगा. That is the automaticity. What is meant by excitability? What is meant by excitability? Excitability of your heart muscle. So minimum intensity stimulus required for depolarize the cell membrane. Minimum intensity stimulus required for the depolarization of cell, which depends on the level of resting or diastolic need. So excitability क्या होता है? After the stimulus, so how cell will contract. So minimum intensity of stimulus required to depolarize the cell membrane.
which depends on the resting or diastolic negativity. As negativity decreases from minus 90 millivolt to the minus 70 millivolt, excitability of cell will increase. And that's why now what is next? Threshold potential. So what is it? The level of intracellular negativity at which there is a erupt and complete depolarization occurs. है ना? जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है सेल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है -90 मिलीवोल्ट, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे सोडियम अंदर नहीं जाता है, उस टाइम पे डीपोलराइजेशन नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज सेल नीड ए पर्टिकुलर पोटेंशियल. ओके, तो व्हेन -90 से लेके -70 -65 तक आएगा ड्यू टू एंट्री ऑफ पोटेशियम चैनल, पोटेशियम आयन, उस टाइम पे कुछ उनका मतलब एक स्पार्क होना चाहिए ना. झगड़े कब होते हैं? जब उसने सामने वाले ने कुछ ऐसा ऐसा वर्ड बोल दिया आपको कि आपको मतलब स्पार्क मिल गया आपको, नहीं अभी इसको धोना है ना, तभी जाके रोके ना आप. वैसे अभी ऐसे थोड़ी झगड़े होते हैं आई कि मोट आगे गए किसी को मारा, ऐसा नहीं झगड़े होते ना. झगड़े कब होगा आपका? जब सामने वाला कुछ आपको ऐसा खतरनाक बोलेगा जिसका आपको गुस्सा आएगा, तब जाके झगड़ा होगा ना. वैसे ही सेल में, तो सेल में नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है उस टाइम पे ही डिपोलराइजेशन नहीं होता. when will be the when will be the cell will depolarize? When a threshold potential of cell. Okay, so normally -90 millivolt, that is a normal resting membrane potential. When it comes to -70, so that means there is a increased पॉजिटिविटी, है ना. -90 छोटा होता है, देखो -90 क्या है? छोटा है. यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा आपको, लेकिन नहीं, -90 इज अ स्मॉल वैल्यू देन -70, है ना. -90 इज अ स्मॉल वैल्यू देन -70. अगर ये माइनस हटा दो तो 90 बड़ा हो जाएगा. +90 इज मोर देन +70, बट -90 इज स्मॉलर देन -70. So when potential will come to -70, the level of intercellular negativity, that is nothing but the threshold potential. So level of intercellular negativity at which there is erupt and complete depolarization occurs. So if threshold potential, देखो, if threshold potential is raised from -90 to -70, the automaticity of tissue is suppressed. तो जब -90 से -70 तक उसका पोटेंशियल आ जाएगा, है ना, तब ऑटोमेटिसिटी जो है ना, फिर से अगर पोटेंशियल आता है तो ये रिएक्ट नहीं करेगा. तो ऑटोमेटिसिटी विल बी सप्रेस्ड एट अ थ्रेशोल्ड पॉइंट. नेक्स्ट होता है आपका कंडक्शन ऑफ इम्पल्स. कंडक्शन ऑफ इम्पल्स और कंडक्शन वेलोसिटी, नोन एज द कंडक्शन वेलोसिटी. कंडक्शन ऑफ इम्पल्स और कंडक्शन वेलोसिटी. कंडक्शन वेलोसिटी इज नथिंग बट द, it is measured by primarily the slope of action potential and amplitude of phase. Okay? So if the slope is very, है ना, देखो आप ऐसे नोड में क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन है ना, स्लोप बहुत ही ज्यादा है वो. Okay, right, dv by dt, that is the slope. Slope is very high, and that's why at the SN node conduction velocity is very high. But at the ventricles, at the Purkinje fibers, so it is a little bit slanted. You know? तो यहाँ पे slanted होता है Purkinje fiber. That's why at the Purkinje fiber conduction is slow. So conduction velocity of impulse. Conduction velocity is determined by primarily the slope of action potential and amplitude of phase zero. Any reduction in the slope leads to depression of conduction. Any reduction in the slope of this known as a leads to depression of conduction. That is also arrhythmia. Propagation of impulse. Impulse कैसे propagate होता है? Generate तो हो गया, कैसे होगा propagate? In a cardiac tissue, the impulse propagation depends on the effective refractory period of the tissue and conduction velocity. So, in a effective refractory period and conduction velocity. What is meant by inotropic effect? So, I already explained you. It is the action of drug on the contractility of myocardium. अगर कोई drug है, so if any drug is there which is increasing the contractility of myocardium, known as a positive inotropic drug. What is inotropic action? It is related with the contractility of heart. Okay, so if drug is increasing the contractility of heart, known as a positive inotropic drug. If it decreases the contractility, known as a negative inotropic drug. So inotropic action is related with the contractility of myocardial cells. The positive inotropic drug will increase the contractility of myocardium. That is the force of contraction. Remember, force of contraction अगर increase हो गया तो उसको बोलेंगे positive inotropic drug.
Yeah. Now, what is meant by chronotropic drug? So it is the action related to the heart rate. पॉजिटिव chronotropic drug will increase the heart rate. Now last में आता है lucitropic action. जैसे अपने दो तीन देखा है, वहाँ चार पर देखा है, bathotropic action देखा है. Lucitropic action means it is the action of relaxation of heart. Action of drug on the relaxation part of heart. It is a diastolic function of heart. So positive lucitropic drug will decrease the positive lucitropic drug will increase the relaxation of your heart. Negative lucitropic drug will decrease the relaxation of heart. Okay. So are you getting these terms or not? These terms important is excitability, threshold potential, conduction of impulse, inotropic action, you know, chronotropic action, then lucitropic action, pathmotropic action. Pathmotropic action is related with the conduction velocity. So those drugs which increase the conduction velocity known as a positive pathmotropic. Are you getting or not? Last time हुआ था ये. Yes, okay. Last time भी ये हुआ था. Next अपन देखेंगे arrhythmia. So arrhythmia is nothing but the disturbance of rhythm of heart and known as a arrhythmia. So any disturbance in the rhythm of heart known as arrhythmia. So arrhythmia are of different type. So arrhythmia are of different type. So first one is a normotropic arrhythmia. Normotropic arrhythmia. Normo मतलब क्या है? Normo मतलब normal. Normotropic arrhythmia. So normotropic arrhythmia does not require treatment. So arrhythmia they are classified into two types: normotropic arrhythmia and ectopic arrhythmia. नॉर्मोट्रोपिक arrhythmia साइनस टैक्कार्डिया, मतलब जैसे बैठे हो आप, है ना, आप बैठे हो, आपको कोई इंप्रेशन हुआ है, थोड़ा सा बुखार आ गया, तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाए, जैसे आप कोई टेंशन में हो हार्ट रेट बढ़ जाए, दैट इज अ साइनस टैक्कार्डिया. हार्ट रेट बढ़ना साइनस टैक्कार्डिया. वैसे आपका हार्ट रेट कम भी हो सकता है, साइनस ब्रैडिकार्डिया. So depending on the cold condition, depending on the state of mind. Okay, sinus, that is known as a sinus arrhythmia. So sinus arrhythmia may be either sinus tachycardia or sinus bradycardia, and most of the time this sinus tachycardia, sinus bradycardia, or sinus arrhythmia does not need any treatment. So your body will correct itself. You know, sinus tachycardia, normotropic arrhythmia. So it is not a disease. Okay? ये नहीं है. Most of the cases does not need any treatment. Second type is the ectopic arrhythmia. So there is a generation of ectopic cells or ectopic focus which will generate the impulse and will disturb the normal rhythm of heart, arrhythmia. So in this you have different type. So first one is a heart block. Heart block. First one is a heart block. ब्लॉक कहाँ पे है? हार्ट आपका ब्लॉक कहाँ पे होता है? आपका ऐसे नोड में ब्लॉक हो सकता है. So as I told you, arrhythmia is nothing but the disease of either there is a problem in the conduction of impulse or either there is a problem in the generation of impulse. तो कंडक्शन अगर ब्लॉक हो गया तो हार्ट ब्लॉक होगा, राइट. सो कंडक्शन ब्लॉक कहाँ पे हो सकता है आपका? सो यू मे हैव ब्लॉक इन द साइनोआर्टेरियल नोड. So if there is a block of impulse conduction or generation of impulse conduction at the sinoatrial node, known as a sinoatrial block, it is a type of arrhythmia. और it may be either atrioventricular block. AV node में अगर block हो गए, so atrioventricular block, atrioventricular block, so AV block. AV block is also having different grades. AV block में different grades होते हैं. AV block it is classified into two types: so complete heart block and incomplete heart block. Incomplete heart block. Incomplete heart block. So what is that? So it may be either again divided into first degree, second degree, first degree heart block, second degree heart block, then वेन पेज फिनोमेना एंड बंडल ब्रांच ब्लॉक. ये डिफरेंट टाइप्स का हार्ट ब्लॉक का ये टर्म्स है. फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक वो डिसाइड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट, क्या क्या हो रहा है क्या. सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, देन वेन, ओके, वेन चेबेक, देन वेन के ब्रांच फिनोमेना एंड बंडल ब्रांच ब्लॉक. ओके, देन आता है आपका नेक्स्ट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक नोन एज अ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. कंप्लीट हार्ट ब्लॉक मतलब क्या? थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक. इनमें तो either there is a AV node block, or that is known as AV nodal block, or infranodal block. Okay, now this is a heart block. Now extrasystole means what? If there is a, if your heart is contracting one more time, है ना, that is known as extrasystole. For example, जो आपका atria है, so if there is a
defect in the conduction system, or if there is a ectopic foci, they will send another signal. नॉर्मली एक सिग्नल तो आएगा किससे, एसए नोड से, दूसरा ectopic फोकस से। एसए नोड जो कांटेक्ट करता है वो मान लीजिए 2 बार कर रहा है, ectopic फोकस के सिग्नल की वजह से क्या होगा, 3 बार कांटेक्ट होगा, नोन एज एक्स्ट्रासिस्टोल। इट मे बी इन द atrium, atrial extrasystole or avinodal extrasystole or ventricular extrasystole. Paroxysmal tachycardia, paroxysmal tachycardia. So it may be is okay, it may be supraventral, supraventricular tachycardia. So atrial or supraventricular tachycardia. supra मतलब superior, ventricle मतलब ventricle, ventricle के superior में कौन होता है, वो होता है atrial. supraventricular tachycardia, supraventricular arrhythmia, so it is nothing but the, जैसे टर्म है उसमें ventricle, but ये आता है atrial, atrial because it is a supraventricular tachycardia. आपण देख रहे हैं supraventricular tachycardia, yes, in supraventricular tachycardia, ये टर्म तो है supraventricular tachycardia, but it is not a, it is not a, it is not a, है ना, यहाँ पे वेंट्रिकल्स ज्यादा बीट नहीं कर रहे, सुप्रावेंट्रिकुलर टेक्कार्डिया में एट्रियल प्रॉब्लम है, एट्रियम में प्रॉब्लम, तो सुप्रा मतलब सुपीरियर, सुपीरियर दूसरा टर्म होता है वेंट्रिकल, सुप्रावेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल के सुपीरियर में कौन है, एट्रिया, तो इट इज अ एट्रियल टेक्कार्डिया। देन एविनोडल, एविनोडल ब्लॉक में बहुत सारा टाइप होता है, सर्कस टाइप ऑफ ब्लॉक, आई विल एक्सप्लेन दिस इन अपकमिंग स्लाइड। देन वुल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, इट इज अ जेनेटिक डिसीज, ये वुल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम जो है, इस इज जेनेटिक डिसीज, देयर इज अ डिफेक्ट इन द कंडक्शन सिस्टम ऑफ, then Laun Ganong Levine syndrome is also another syndrome. Then ventricular tachycardia. If ventricles are beating more than normal, known as a tachycardia. If ventricles are beating less than normal, bradycardia. है ना? तो atrial dose होता है, ventricular dose. Then other means other type of arrhythmia. So arterial flutter, arterial fibrillation, ventricular fibrillation. These are the types of arrhythmia. Are you getting this or not? समझ रहा है ये आपको?